See, eventually I always felt कि यार अगर ये स्टोरी है कम बजट में हो सकता है तो I will just produce and make it out and send it to film festivals. If it happens, didn't happen. चुपचाप दूसरा काम करेंगे फिर से पैसे जमा करेंगे बेचेंगे. हम सबको 9 to 5 जॉब नहीं अच्छा लगा था. That's why we started doing 24 hours job. पैकअप के बाद मैं सोचा था इसको सुना होगा. After the packup he started crying before. मैं उसको कुछ नहीं बोला. रंजीत भाई मेरे से नहीं हो रहा है. और he was like रो रहा. You're married, so like, how does your wife feel about your working hours? She's very comfortable with it. 5 साल हो गए हैं तो दोनों एक दूसरे से बोर भी हो चुके हैं. Are you a loser? Are you a freak? Do you need a lover? Don't talk to me. Don't talk to me. Don't bother me. Welcome to Real Struggles. We're talking to real filmmakers and actors about their struggles working in the chaotic world of films. Today, our guest is director, associate director, production executive producer, editor, actor, Ranjeet Jha. Ranjeet is actually like my film school. So when I started working with Nagesh Kukunoor, Ranjeet was his associate at the time, and I mean he still works with him. And Ranjeet taught me everything about working in films as an AD and what to do and what not to do. So Ranjeet, when you were a kid also, did you watch a lot of films? तो वो इमेज तो था, तो पृथ्वी के सामने जो घूमते रहते हैं ऐसे दाढ़ी बड़ी बड़ी है और तो मेरा ऐसा इंस्पिरेशन था कि मैं वैसा कोई बनूं. तो कम्युनिस्ट. बट इवेंचुअली जब मैं बड़ा होता है गया, जब देखा दुनिया में तो यार ये तो फेलियर हो गए ये लोग तो चलते नहीं है. सो देन तो आई फोकस्ड ऑन एक्टिंग, तो मैं थिएटर किया काफी. या बट फिल्म्स देखना तो लाइक सी मेरे ख्याल से इंडियन फैमिलीज में हम सब बॉलीवुड पे पैदा हुए. लाइक तो बॉलीवुड तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर, नॉट वांट टू बी अ फिल्म मेकर, बट बॉलीवुड चलता रहता है बॉलीवुड एंड इवन टीवी. लाइक हम जब 90s में पैदा बड़े हुए तो भी टीवी इन्फ्लुएंशियल था. लाइक शाम को 4 बजे कुछ आता था, रात को कुछ आता था. वी यूज्ड टू वेट कि हाँ ये आएगा. रिमेंबर लाइक उस टाइम पे सीरियल्स एक तहकीकात करके एक डिटेक्टिव सीरियल्स था, चंद्रकांता एंड मोगली. तो ये सब चीज तो लाइक वो मीडियम से हम अवेयर थे फुल्ली लाइक उस टाइम पे भी. पर फिर फॉरेन फिल्म्स का एक्सपोजर कब हुआ तेरा? तो मेरा फॉरेन फिल्म का एक्सपोजर एक्चुअली काफी लेट हुआ. मैं खाली इंडियन कंटेंट देखता था and like commercial Indian content या like everything like Bimal Roy, Satyajit Ray, ये सब भी? नहीं not really हिंदी content देखता था, Indian content नहीं. But interestingly I got the exposure for international cinema from a person who is not in media. So मैं इसे एक बार like मैं डिसाइड कर लिया था उस वक्त कि मुझे फिल्म मेकर बनना है. एंड मैं इनफैक्ट हॉलीवुड भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं था हॉलीवुड को. एक बैंकर फ्रेंड ऑफ माइन एंड मैं कुछ प्रकाश झा या किसी के ऊपर तो बात कर रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसे सडनली मुझे बोला कि तूने कुरोसावा देखा है. मैंने बोला नहीं. नाम सुना था? नाम भी नहीं सुना था. तो वे ही लुक्ड एट मी, आई फेल्ट इंसल्टेड कि यार ये साला मेरे को ऐसा बुरी नजर से क्यों देखा. So I went and I just downloaded all Kurosawa, and that was my first. The first movie of Kurosawa was Jumbo that I watched. And that's the best movie to start with, also. Yeah, so I don't know. In his filmography. I started with Jumbo, then I saw Rashomon, but then I went in Kurosawa, and then I started watching like first film to last film. So this happened with that. So after that, I know, अरे अपने हिंदी सिनेमा के बाहर एक अलग दुनिया है. So then I started like European cinema. So of course Bicycle Thief and all are highly recommended for everyone. So वही सबसे start हुआ. फिर धीरे धीरे टोरेंट था तो एक एक करके. Then we also started a film club, Kalyan Movie Club. So we didn't start it. My friend Bhushan, he started it, and so he invited me once. I met somewhere, I don't know. So Bhushan, Swapnil was also here. So Swapnil and I was like a part of it. So हम लोग हमेशा हर weekend पे we used to play movies. So that was like दोनों एक सर्कल बनने का मूवी देखा, मूवी के बाद डिस्कस करने भी हो रहा है यार, मजा आ रहा था. कितने लोग आते थे? फिल्म क्लब में लाइक एक्चुअली कभी कभी बहुत लोग आ जाते थे और कभी कभी कोई नहीं होता था. कभी कभी मैं और भूषण खाली साथ में देखते थे और कभी कभी लाइक आ जाते 10-12 लोग आ जाते थे. बट वी यूज्ड टू डू लाइक 1 या 2 इवेंट किए थे हमने, तो उसमें अच्छा खासा क्राउड था. इंटरेस्टिंगली काफी लोग आते थे. आई रिमेम्बर टाइम व्हेन हम लोग ने कुरोस्तामी का 10 दिखाया था एंड आई वाज अगेंस्ट इट. लाइक मैं भूषण को बोला कि यार कोई नहीं देखेगा ये, अपने को थोड़ा पॉपुलर सिनेमा दिखाना चाहिए. एंड 10 स्क्रीन हुआ एंड देयर वाज लाइक लॉट्स ऑफ ओल्डीज इन द क्राउड.
and उसमें से couple of people who were like working in bank or someone was working in railway, like 9 to 5 job वाले लोग, and they spoke about the film, which was like, oh fuck, खाली हम ही नहीं सोचते. The people who are not in cinema, like they can think a lot, and जो subtext समझने का जो capability है, वो खतरनाक था उनमें. तो so ऐसा ही experience हुआ movie. So when you started on Lakshmi, did you know anything on how a feature film operates, how you schedule for things? Because on ads, it's all 2-3 day shoots max, no? The process of it was alien to me, but I knew about it. हाँ, ऐसा तो schedule करना ही पड़ेगा. And it was very, I always tell everyone, like even to you, I might have told you, 99.99, it's common sense. Yeah. अगर मुझे एक 30 दिन का schedule करना है, तो हाँ, of course मेरे को actors के date लेने पड़ेंगे, मेरे को location के dates लेने पड़ेंगे, ये fuck up हो सकता तो. So it came naturally. When I'm thinking in hindsight, so it's also because of all my time I spend it on like television sets, and even theater we do scheduling. Yeah. So rehearsals you have to plan, you have to block a room to do your rehearsals. We sell tickets, तो वो सब कुछ रहता है. So yeah, so process of it was alien to me, how to do it, like, because of course like planning for 3 days and planning for 90 days, there is a difference. So and 90 days में the chances of like mistakes are more. So उस हिसाब से how to minimize your mistakes and all, तो एक process समझा, but scheduling के बारे में पता था. And what about like the other things that go into like being an AD on set, like understanding action props, breaking down scene, what is required? So see, my logic is always when you read the script, I always read the first script that come to me, I read it twice. Once just to, because I also want to make films eventually. So I want to read it twice. So first I just read as an audience. And second thing that I do is breaking it everything. All the action props, all the emotions. Like अगर मैं कोई scene पढ़ रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि, and I visualize it from my sense. Even if I'm not directing it, वो automatically मेरे अंदर है. Like think like a director. हाँ, so I think of it. अच्छा ये इधर anger हुआ है तो ये emotion यहाँ, अरे उधर anger था यहाँ पे तो हंस रहा है ये. So that kind of connect I used to make, and this is something which I'm not putting effort on. ये subconsciously हो रहा है. So I feel as in for an AD, it's most important to break it down everything. Like जितना तुम break कर सकते हो, like अगर तुम उसको as such whole अभी web series तो like it's more complicated, like 800 minutes of footage and all. So roughly एक show 10 episode का एक show अगर 40 से 400 minute 400 pages. So इतना दिमाग में भरना बहुत मुश्किल है. Breaking it down is the only thing that helps. Like everything, like एक line, तो location wise, जितना तुम break करोगे तुम्हारा shooting उतना convenient होगा. It's so action prop, script में ही है सब. Also, I come from a school where scripts are Bible. So like बहुत rarely ऐसे हुआ है. Even I don't remember right now कि ऐसा कुछ script में नहीं है, and there is a requirement of that. But there are in between I do lots of ad films here and there. So उसमें there are directors that doesn't give brief. So उसमें you just have to think. I remember one incident when I made I was assisting a director, and there was someone in the scene, there was no scene written, it was a song, and we have to picturize the song and shoot it. So that not even any script, there is no requirement. So we were only like sitting down and उसका एक break down किया उसको पूरा. And एक particular thing था कि एक family is going abroad to study. एक sequence था गाने का. And there was no passport on set. Okay. So suddenly director wanted passport. So eventually I called my friends and we got it. But this was something I thought कि अच्छा नहीं लिखा, but विदेश जा रहा है तो फिर passport तो चाहिए. So this is where the thinking comes in, like how smart you are, and you have to think of whatever is not there. So, but it depends. Like for some filmmaker like Nagesh sir doesn't do that. Most of his stuffs are written. Yeah. So if there is a passport, there is a passport mentioned in the script. Yeah. So it becomes easy for an assistant director, but for other, like lots of people I know, they don't work from the script, and they are good filmmakers. They don't they are very impromptu. They go on set and look around and think through it, and eventually like अच्छा एक Russian model लेके आओ.
So कहाँ पे जुहू में शूट कर रहा हूँ? So that kind अंधेरी में of मिल जाएगा. हाँ, ढूंढना पड़ेगा. So ऐसे भी होता है. When you do get like a new bunch of ADs working for you, you probably face this problem where they don't apply their entire intelligence to drawing these things out. How do they pick that up though? See, I had a very interesting conversation with one of my ADs, like 3-4 साल पहले. I told him, जैसे मैं सबको बोलता हूँ ना, you don't know, I get hyper and all. So मैं बोला कि यार ये common sense है भाई. He told me very innocently कि रंजीत भाई आपके लिए जो common sense है वो हमारे लिए common sense नहीं है. And it took time for me to digest it. But even if I think of it in a hindsight, see, every brain works differently. And this is something which I'm still digesting. But because when I say this is common sense, but for you it is not a common sense. Yeah, it's based on your own exposure, your own my experience and conditioning. all. Yeah. So different perspective always helps me. But I don't like only one thing. If you are different, that always is interesting. If you are different and if you think, like if you look at things differently, it's always interesting. And because there is something for me to learn from it. But sometimes what happens is that some ADs, and you know lots of people I know, like, so ADs, they are like very blocked. This is the only way. Like, they come from a school where there is first AD, second AD, third AD, fourth AD, fifth AD. I never believed in it, you know that. Yeah. So, उसमें क्या होता है, this is the way, second AD should do this. Third AD should do this. So, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, because eventually we all wants to be a director. हाँ, so मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है. But looking at things differently, कोई देखता है तो इनफैक्ट मैं मैं एडीज को सब बोलता हूँ कि जो कोई भी चीज ऐसा मत करो जो तुमको पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. अगर तुम्हें पता नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेकडाउन है या कुछ भी है तुम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्यों कर रहे हो, तो मत करो. फर्स्ट आस्क मी. देयर आर टाइम्स व्हेन सम थिंग्स डजंट मेक सेंस बट स्टिल यू आर डूइंग इट, देन यू आर नॉट लर्निंग. सो ये मैं पहले बोलता हूँ. No, and also it's your own, like, what makes your job easier should be what you do, right? As long as it's not hampering everyone else's process. Correct. But see, everyone wants to make a film, na? Yeah. Like, even like I have not seen any ass AD like, अरे चूते लोग क्या कर रहे हैं, हमको नहीं करना. ऐसा तो कोई नहीं होता. Everyone is a good human being. Everyone wants to work hard. And this media, like from a light boy to a spot boy, very rarely I come across a people who are not hardworking. Yeah. Like everyone is hardworking. There are people who are lazy. That is like, but still like 5 मिनट का नैप लेंगे, एक सिगरेट छुट्टा मार के आएंगे, वो अलग बात है कि. बट जब भी वो फोकस्ड हैं तो हार्ड वर्किंग सब करते हैं. एंड इट्स लेबर वर्क. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट वर्क. सो इतने लाइक एडीज आर हार्ड वर्किंग. इट्स ऑल लाइक कभी कभी क्या होता है कि पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है लोगों को. सो आई फील कि मैं थोड़ा मेरा में पेशेंस कम है. But I'm laughing because you know. So yeah, Ranjeet, if something goes wrong on set, even if it's that small an issue, he'll start panicking, just sweating, running everywhere. हाँ, so patience कम है, but I'm slowly learning. I'm slowly learning कि यार हर किसी को तरीका अलग होता है. Because a lot many अभी down the line, because recently I worked with lots of new people. So I saw that कि initially I used to get harrowed and अरे यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. But then eventually the things get done. ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में नहीं है तो चीजें होती नहीं. तो because everyone is working towards the same product. So that's what is interesting, and I'm also learning in that. So with Nagesh sir, now you spent how many years working with him? 2000 August 2012. So it's 11 years roughly. And so then finally you did direct something with Nagesh sir, no? You did City of Dreams City season 2. of Dreams season 2 I And co-directed with Supriya and Nagesh sir, and 3 I co-directed with Nagesh sir. Yeah, so Ranjeet directed a short film called Aasra, and then after that I think directly you did COD season 2 now. Direction wise, Yeah. I directed 3 short films. Aasra was with you. Before that, I told you the short film that I did with a friend of mine. And there was one more small short film that I did around that time only. No, 4. There is one more in college what I did. Okay. But again, no one knows that. So all my short films are with me. They're not commodities. They're not commodity. I'll put it that on the app that you were just mentioning. Was it hard for Nagesh sir to give you the trust to direct? That you'll have to ask Nagesh sir. What do you think? See, Nagesh sir is a person who he takes time. Like
to like if someone wants to get into his comfort zone, it can't happen in a year or 2 or 3. It will take time. And I was just around, no? Like there was like at least 7-8 years before he trusted me to do something like that. Yeah. So and also like when I did my Aasra, so he liked the way I directed actors. And on set, like in season 1 also, couple of shots he used to tell me कि ये shoot कर ले, वो shoot कर ले. तो trust building eventually like down the line हुआ. ऐसा नहीं कि एक पहला project में I pitched sir I want to be a director and कर ले. So see the problem is ना कि हम सब ideal world में रहते हैं. And again, so first time when I met Nagesh sir was not when I was started working with him. So when I was in college, he came there to promote Mode. Okay. And so this is before you before I joined that ad agency. Yeah, in college. So he came there to promote Mode. And because I was someone in college who used to watch lots of world cinema and all. So like student approach and give me a list of questions what to say. So and I was also operating the camera that time. So I asked like at least 16-17 questions that day to Nagesh sir. So one of these questions, and I don't remember the question but I remember the answer. He said कि यार लोगों के दिमाग में ना फिल्म मेकिंग जब भी बोलते हैं तो दिमाग में एक इमेज आता है प्यासा, वह जहाँ पे गुरुदत्त ऐसे खड़ा है. बट फिल्म मेकिंग इज नथिंग लाइक इट. कि आर्टिस्ट है लेकिन that doesn't, because फिल्म मेकिंग also involves lots of talking. फिल्म मेकर बिकॉज हमें सबसे बात करना है, एक्टर से बात करना है, कैमरामैन से बात करना है, एडिटर से बात करना है, पीपल मैनेजमेंट. सो देन इट इज नथिंग लाइक कि ऐसा उदास बन के बैठे हुए अब कि ऐसा कुछ नहीं है. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी थिंग. सो कमिंग बैक टू आइडियल वर्ल्ड में सोचते हैं ना कि यार कोई भी बंदे को अगर मैं कोई गंदा चीज, कोई भी जो गंदा नहीं बोलना चाहिए लेकिन कोई ऐसा सिनेमा जो अच्छा नहीं है, समझो स्लैपस्टिक कॉमेडी जो जिसका जो जॉनर नहीं अच्छा लगता, दे आर वेरी क्विक टू से क्या ये गधे जैसा फिल्म बना है. Nothing wrong in it. You should be judgmental. But the thing is that ना कि जो प्रोसेस जब हम करते हैं ना, क्यों, रीजन व्हाई अगर हम पूछे तो प्रोसेस बहुत समझ में आ जाता है कि लाइक सो इफ यू से दैट यू इफ यू फील दैट ओके आई डिड समथिंग व्हिच वाज नॉट गुड, सो यू विल हैव लाइक व्हाट ऑल हैपेंड. अच्छा मेरे पास लिमिटेशन ऑफ स्पेस था. आई रिमेंबर दैट पार्ट था, लिमिटेशन ऑफ स्पेस था. ओके ऑन द क्विक ऑन माय लाइक मैं उस टाइम पे यही सोचा तो मे बी आई शुड हैव जस्ट हेल्ड बैक एंड हैड लाइक एक सुट्टा मार के आता है ऐसा कुछ सोचता. तो कुछ और सोचता. सो उस वक्त जो सोचा वो सोचा. एंड इट्स अ प्रेशर कुकर सिचुएशन. लाइक आई कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड लाइक बिकॉज जब भी everyone is looking at you on set कि यार ये director है, इसको आंसर होंगे. No, because I feel more stressed doing second unit because you're responsible for someone else's But even directors are responsible, no? No, but when you're directing your own story, your own thing, you already have a visualization of how you want to tell the story. When you're trying to direct someone else's vision in even a second unit thing, it sometimes gets tricky because you're like not 100% sure what they are expecting. See, so because I directed lots of things for Nagesh sir. So very initially I made a piece with this ki, see I know Nagesh sir's taste, but at the same time if every time I force myself to अरे यार ये Nagesh sir को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, so then I'm not justifying ना, then what's the point of me doing it? Anyone can do it, copy paste करना है तो. So I always try to bring अच्छा मैं ऐसे देख रहा हूँ. Okay. So and of course ये धीरे धीरे और इवॉल्व हो रहा है. जैसे कि सीजन 1 में थोड़ा लिमिटेड था, लाइक सीजन 1 से पहले बहुत लिमिटेड था, उसका सीजन 1 में थोड़ा खुला, सीजन 2 में और सीजन 2 में बहुत खुला, सीजन 3 में और खुल गया. सो सीजन 3 में lots of things I do and when Nagesh sir saw it on screen तो even he never knew about it because I don't discuss. Once I shot it, like खत्म होने के बाद मैं सर से डिस्कस नहीं करता हूँ, एडिट पे देखो जो होगा. तो मैं सर से डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी पट्टी अभी क्या मतलब अभी क्या है भाई जो है वो है. तो सो ये है. तो मेरे ख्याल से इट्स अ फाइन लाइन, like of course but even director, if someone is trusting me to make a film for him, sir हर आदमी यहाँ पे फिल्म मेकर है. if you go to a network, everyone is a filmmaker at that. Like 4 लोग तुम्हारी स्क्रिप्ट सुन रहे, नरेशन देख रहे, सब लोग को फिल्म मेकर बनना है. So हर किसी के पास ओपिनियन है, हर किसी के पास आइडिया है. So I think whenever you are doing your stuff, पीछे है 10 लोग जिनको तुम्हें प्रूव करना है कि भाई ये मेरा पिक्चर है एंड इट शुड बी दिस. बेसिकली वही बोलना चाहिए. अगर तुम खुद की भी फिल्म बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि लाइक इट्स योर विजन एंड यू आर जस्टिफाइंग इट. अच्छा ये मेरा है, वो है, बट एट द सेम टाइम देयर आर ऑलवेज 10-15 पीपल्स बिहाइंड यू. एक नेटवर्क का फुल आर्मी है, प्रोड्यूसर्स हैं,
अब कहीं किसके पास भी जाओ कि हाँ ये बंदा मेरे जैसा बना रहा है कि नहीं बना, जैसा जिस तरह से लिखा था वैसा बना रहा है कि नहीं बना है, या राइटर का जो स्क्रिप्ट है उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है. सो इट्स ऑलवेज लाइक किसी के और के लिए ही बना रहे हैं. वेरी फ्यू आई थिंक फॉर्चुनेट पीपल आर देयर जो अपने हिसाब से बनाते हैं, एंड सक्सेस तो सक्सेस, फ्लॉप तो फ्लॉप. Since you worked with Nagesh for so long, you also kind of like incorporated a lot of his own like direction style into the way you work, right? See, ये तो 100% if you spend time with like anyone, वो होता ही है. And I realized this for the first time when I was doing Aasra, because all my design, like you were very integral part of it, but Aasra में जो मैंने design किया था वो मैंने execute नहीं किया. And it was very obvious because मैंने जो design किया था उसको 7 दिन लगता. Yeah. और मेरे पास कुछ 2 दिन था. हाँ. 2 दिन 3 2.5 days. 2.5 days. So 2 दिन के अंदर करना है तो उस प्रेशर की कोई सिचुएशन में वही हुआ जो हुआ, like so it came naturally to me. Yeah. इसमें राइट या रॉन्ग कुछ नहीं होता. सी एट द एंड ऑफ द डे मैंने फिल्म बनाया, इट वाज एन अचीवमेंट. एंड एवरी फिल्म मेकर आई थिंक लर्न समथिंग फ्रॉम हिज पास्ट फिल्म्स. क्या और आगे जाके उसको वो रिपीट नहीं करना रहता है, करना रहता है उसी टाइप का रहता. तो इट्स लाइक लर्निंग प्रोसेस. And short films था, people used to like everyone I tell कि यार सीखना है तो short film बनाओ. It's always better to make your film to learn than to assist someone. Yeah. Because then you kind of also know. How will you execute it? Correct. What will you do when actor wants to leave in half an hour and you have a 4 page to shoot? Yeah. What will you do? Yeah. So then you will put a camera where what will be your blocking कि एक shot में यार scene निकल जाए और actor को छोड़ दो मेरा scene निकल जाए. So ये सब रिस्क है. फिर then बहुत सारे अलग टेक्नीशियन को कैसे संभालो. Yeah, camera overheats for 2 hours. You can't use the camera then, and you have like. You have to plan everything. Yeah. So वो सब है. Still execution wise अगर एक प्रोजेक्ट कर लिया आपने तो I think you are like you can now do it. Like, बाकी सब common sense use करो, अपना फिल्म बनाओ. जब तक अपना फिल्म नहीं बनाओगे, because when you start directing, that will be the first day of your learning. So why haven't you started directing? I've thought about it. Why like it's not that I'm not trying. I'm trying, but also now we all came to be a filmmaker without the. Is there the time will come when there will be a story. There will be like एक अंदर से एक फोर्स आएगा कि यार इससे बताना है लोगों को. तो मेरे ख्याल से वो फोर्स नहीं है. बाकी सारे रीजंस है. प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा, स्क्रिप्ट राइटर ढूंढ रहा हो, ये सब रीजंस है. बट वो अर्ज कि यार ये स्टोरी मेरे को इस तरीके से लोगों को बताना है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म नहीं बना पा रहे, बीइंग लाइक कि यार ये बंदा तो फिल्म बना लेना चाहिए था अभी तक. पर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो अर्ज नहीं है. इट शुड बी लाइक कि अगर मेरे को सीखने आता है तो मैं सीखूंगा, चाहे कोई भी स्टॉप करे. इट शुड बी लाइक दैट. तो वो अर्ज आई थिंक इज मिसिंग. मे बी आएगा इवेंचुअली. No. What are the type of films you want to make? हाँ, so that depends on the type of film that you want to make. So सही गलत कुछ नहीं होता. It's always like what works for you. Some people are very confident making something which like you want, like which you happen to you. And some people like are very good with observing stuff, so they can observe something and they can make a beautiful film about it. So वही तो कुछ personally होता है, कुछ तुम observe करते हो, कुछ तुमने देखा है. तो सही गलत कुछ नहीं होता है. There are lots of stories that inspired me, coming back to the urge, but I don't know कि like वो urge है क्या नहीं. See, urge है तो घर बेच के बना, किडनी बेच के बना पिक्चर. अगर urge है तो, क्योंकि लोगों ने किया है, ऐसा नहीं किया. Like lots of people in parallel cinema के time पे like I heard, I don't know it's true or not, कि महेश भट्ट and all have like taken loans from bank. मेरे को हर 2 घंटे में बैंक का लोन देने वाला कॉल आता है. मैं ले रहा हूँ क्या, नहीं ले रहा हूँ. They have taken loan from bank and they made a film. Yeah. It is so insane. Yeah. Any sane person will not do it. Yeah. But they did it. कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, सब at the end तुम क्या किए हो वो मैटर करता है. But I mean, you've been pitching also. You've like whatever some stuff that you've written. What has been the challenges in pitching and getting a film mounted for you? The people who are listening to you, if you're pitching it to someone, they are looking at it from a point of view that how will they sell it to someone. You understand the difference? Like if I'm pitching my stuff to you and मेरे को as an ये पता है कि भाई मेरे को तेरे से 10 करोड़ रुपए निकलवाना है और पिक्चर करना है, then it's different. Yeah. But suppose if I'm pitching it to you and you're always thinking कि अच्छा इसको मैं मेरे बॉस को कैसे बेचूंगा, तो then it becomes different. Yeah. The process जो कि एक 1-step process था, it becomes like 3-step process, 4-step process. And then things get complicated because there are 4 brains working on one idea. अरे मेरे साथ ये हुआ था, ये अच्छा इसको भी incorporate करना.
कि so सब अपने आइडियाज लेके आते, तो see it is working also, but आज फिलहाल जो मैं फेस कर रहा हूँ ये इशू नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी एक हर्डल है. So but it's a part of the game, क्योंकि as a filmmaker also I believed कि the more I discuss about my work, I am getting more sorted, like creatively, कि अच्छा हाँ ये रूट सही है, ये रूट गलत है. So that is something I believe in personally. So it is helping me also. But I just started, so I don't have much of an experience as a pitching. See, eventually I always felt कि यार अगर ये स्टोरी है कम बजट में हो सकता है तो I will just produce it. Yeah. And make it out and send it to film festivals. If it happens, didn't happen. YouTube. चुपचाप दूसरा काम करेंगे, फिर से पैसे जमा करेंगे, बेचेंगे. Yeah. So I think that's the one way. But अभी actually काफी scope है because of this all new OTTs and everything is coming ना. तो scope काफी है. At the same time there are lots of hurdles also, but there are lots of new films that are coming which are exciting. So before you go and pitch something, what prep do you do? Like, what all do you have ready for the pitch? Basic अपना जो I think all the channels right now they want like logline, if it is a show, तो story of the show, episodic stories, and most of them prefer like a one episode screenplay, proper developed screenplay. And apart from that उसके ऊपर तुम जो कर पाओ एडिट है, like characters brief लिख के दे दो कि ये interesting characters है, और poster design करके लगा दो. तो यही सब presentation है basic. But whatever I pitched roughly it all I started with an idea only. So मैं पहले idea बोलता हूँ, and if people are interested, like when I say people, not a final decision maker, the person I meet, if he's interested, I know कि अच्छा ये interested है, then I send him on other thing. Even if I have everything, मैं सब नहीं भेज देता हूँ. Because it's like suddenly इतना सारा कुछ कोई भेज दे तो वो पढ़ता नहीं है कोई. तो then I see कि अच्छा ये interested है, तो मैं 3 pages synopsis भेज रहा हूँ. So then if he's read it, then if he wants more, then I send him everything. So when you were directing COD season 2, Nagesh was on set those days? Season 3, there was like many time when he was like half a day and then he left and Ranjeet to take over. Season 2, most of it he was there. Sometime he was not there. Like So from Aasra to COD, did you kind of your direction style evolve to more something that's more suited towards you and less from like what you were doing with? See, as I told you, Nagesh writes scripts in very detailed. So it's not that even a person who doesn't belong to Nagesh's universe, if we execute what's written, he will do the exact same thing what Nagesh wants. Most of the time. Like I'm not talking about the nitty-gritty of it, like performances and all. Yeah. But मोटा-मोटा जो लिखा है वो story telling हो जाता है. Because लिखा हो इतना fantastic. He's a very detailed writer. And very clear. Very clear, like no confusion, like ADs में कोई confusion नहीं है कि उसको क्या करना है, और ना ही किसी में. तो evolving in the sense, I think my confidence, every project is learning. So the way when I was doing Aasra, and there was like I was also struggling with lots of actors because मेरा confidence, इसको मैं क्या बोलूँ तो I will get what I want, because I know I'm not getting what I want, but at the same time I don't know what to tell him, Because whatever you tried telling him didn't translate. didn't translate. So eventually when you direct more, when like season 2 when I started directing good actors like Atul Kulkarni or Priya Bapat, so I realized कि यार it's not, and when I looking at Sir, like the way he talked to the actors and all, okay, so I know okay, how do you get into the actor's mind is very important. How do you get into the actor? I think वो चीज़ एक learning है जो कि third season में तो और पता चला, अभी और सीखना बाकी है. I have not reached where I want to. Season 4 आएगा ना. और दूसरी लाइफ में भी बहुत कुछ है. So yeah. But okay, so how do ADs get jobs though? एक तो होता है कि यार रोजी रोटी के लिए करना है, मैं बॉम्बे आऊंगा नौकरी क्या करूंगा. Because when I didn't wanted to do an AD. When I was doing the Nagesh call में तो बोला यार एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि एक लर्निंग मिल जाएगा. Then it started and it didn't stop. But I never wanted to do an AD. So I think people should not do AD. Personally, if you want to be a filmmaker, like because being a junior artist standing on a set and looking at how these ADs are running, what director is doing and all, you will learn more. So learning is not important. Being a spot boy, you will learn more. Being on set, you can go and ask, like हर किसी के contact list में कोई होगा जो कि set पे काम कर रहा है. You can just hang out with him for a day and you will know अच्छा इस तरह से होता है. So I don't think people should do AD. हाँ, लेकिन अगर पैसे का जरूरत है या
रोजी रोटी के लिए जो कर रहे हैं वो अलग बात है, वो कोई कुछ, तो सबका अपना अपना स्ट्रगल है. सो डिफिकल्ट इफ यू वांट टू डू इट बिकॉज तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो वो करना ही है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता. बट इट्स ऑल सिंपल है. लाइक देयर आर 2-3 वेज दैट आई फील लाइक. एक तो यू शुड हैव, जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को एडी बनना है तो वो डायरेक्टली नगेश कुकुनूर को मैसेज भेजेंगे बिकॉज उनके नंबर मिलेंगे. पीपल डजंट नो कि हु इज द फर्स्ट एडी, हु इज द ईपी, हु इज द एसोसिएट. पीपल डजंट नो, लाइक जनरल लोगों को पता नहीं रहता है कि वो लोग लाइमलाइट में रहते नहीं है. बट दोज आर द पीपल हु हायर. सो द प्रॉब्लम इज दैट कि लाइक अभी नगेश कुकुनूर को मैसेज किया है तो नगेश कुकुनूर ने देखा मैसेज, इट डजंट मैसेज देखा नहीं, देखा भी रहेगा तो ध्यान नहीं दिया. तो पता चलना चाहिए कि यार किस कर. तो मैं क्या किया था स्टार्ट में, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई डिडंट नो कहाँ पे जाओ. आई एम टॉकिंग बिफोर कॉलेज एंड ऑल, व्हेन आई वाज इन बैंक. सो मैं जस्ट सेट पे जाके घूमता था. तो लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दैट आर ऑफ माइन आर ऑन टीवी इंडस्ट्री आर बिकॉज आई जस्ट रूम्ड इन फिल्म सिटी कि यहाँ पे ये सेट चालू है, पोस्टर लगा रहता है बाहर, तो अंदर घुस जाने का. तो उधर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो उधर उसके साथ खड़े होकर बातें कर ले, सर क्या चालू है, कैसे चालू होता है. इससे दोस्त बने. सो ऐसे बहुत अच्छे और अच्छे दोस्त बने. लाइक कपल ऑफ माय फ्रेंड्स आर लाइक डिड लाइक so many is a director right now in like so many TV shows, like बड़े TV shows like highest TRPs वाले. तो वैसे ही कांटेक्ट बनते हैं. तो मेरे को जो ऐसा फॉर एग्जांपल वो अभी एडी का हम लोग साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं एडीज को बोलता हूँ कि यार तुम लोग नहीं पता, तो मेरे को 50 बार कॉल आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि यार मर्ड पूरा भरा हुआ है फिल्म सेट से. तुम हर एक किस लोकेशन पे जाओगे वहाँ पे कुछ ना कुछ चालू है. इफ यू अब तुम एक प्रोजेक्ट में काम करो, तुम्हारे इसमें ड्रेस दादा है, स्पॉट दादा है, लाइट बॉयज है, कुछ ना कुछ कर रहे हो लोग. कोई घर पे नहीं बैठा है. मेक कांटेक्ट, कहाँ काम चालू है तेरा, मैं आ रहा हूँ आज. पहुंच जाओ उधर. फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैसेज देम. एंड मेरे ख्याल से मैसेजिंग थोड़ा सा लोग ओवर ये हो गया है क्योंकि लोग अभी मैसेज पे नहीं रिप्लाई करते. आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर इफ आई कॉल समवन, लाइक अगर मुझे कोई कॉल करता है बोलता है सर मेरे को कोई काम चाहिए, तो मैं उसको इट्स ऑलवेज बेटर टू गो एंड मीट पर्सन, इवन इफ इट इज ऑफ नॉट लाइक. अगर मेरे से कोई मिलता है तो मेरे दिमाग में पोजीशनिंग उसका ऊपर रहता है कि यार ये बंदा साला विरार से आया मेरे से मिलने. तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट में भी मैच है, तू आ जा. तो ये भी होता है. But like समझो कि किसी को डायरेक्शन सीखना है, like if they can't afford to go to a film school, what else do they do then? Like थोड़ा तो like you have to understand the workings of a film. You have to understand how to deal with actors. See, I think I know you did a film school, but I think that's like a biggest joke. Film school, because I always, and I'm not. There are respected institute, and I should not comment on it. There are lots of respected institute, FTI and all, and there are technicians from there which I like. So their knowledge there, but the main thing, and I think everyone will agree. Like even I know lots of my friends are from FTI or Biju Patnaik or something like that. So when you talk to them, the thing is that the atmosphere is there. You can create that atmosphere today. Like if you अगर YouTube पे चले जाओगे तो there are so much to learn from it. And also like, and I realized this long back, like जैसे कि जब हम बचपन से टीवी देखते आए, हम बचपन से, तो विजुअल लैंग्वेज किसी के लिए भी नया नहीं है. अगर मैं एक वाइड शॉट के बाद दूसरा वाइड शॉट काटूंगा तो हर किसी को जर्क लगेगा. हाँ, नोवाइज पर्सन, अ न्यू पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड यार क्यों हुआ जर्क, बट जर्क लगेगा. they'll say they'll know something अजीब है, कुछ तो गलत है. ओके, सो और अगर मैं वाइड के साथ क्लोज काटूंगा तो करेक्ट लगेगा. तो ये ग्रामर जो है ना, ये ग्रामर इज नथिंग लाइक एनीवन, किसी के लिए नया नहीं है. हाँ, अभी यू नीड समवन टू टेल यू, टू गाइड यू. तो आई थिंक द यूट्यूब्स एंड टुडे तो लाइक ज्ञान मिल जाता है यार. ज्ञान मिल जाता है. करेक्ट ज्ञान मिलना मुश्किल है, बट ज्ञान मिल जाता है. तो कहीं ना कहीं तुमको अगर समझो करेक्ट पर्सन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तुमको तुम्हारा कॉमन सेंस, देयर आर बुक्स, हर एक चीज के ऊपर बुक्स है. लाइक सिनेमाटोग्राफी के ऊपर बुक्स है, राइटिंग के ऊपर बुक्स है, डायरेक्शन के ऊपर बुक्स है. तो आई थिंक दैट लर्निंग इज समथिंग दैट will be stay long, and it's also less expensive. So how is that calculation made? Like how do you know what budget to allocate for the audience you have? How do you know that? How do you know your audience is even? I'm very bad with this. I don't know. मैं अभी budgets and all को लेके, one thing that I know is that films don't flop. 90% of time it's a film. मैं ऐसे random जो आते हैं उस चीज़ों की बात नहीं कर रहा. इफ इट इज़ अ फीचर फिल्म दैट डोंट फ्लॉप, बजट फ्लॉप्स. सो ऐसे कोई फिल्म है जो 7 करोड़ में बननी चाहिए थी लेकिन लोगों ने 25 करोड़ डाल दिया. रणबीर कपूर को डाला है, उसको 10 करोड़ में लाया, तो बजट कॉन्सेप्ट है ही नहीं 25 करोड़ का, तो फिर मतलब नहीं है.
तो It's like why October didn't do financially as well. lots of films. प्रोजेक्ट कभी फ्लॉप नहीं होता, बजट फ्लॉप होता है. तो मुझे तो ये लगता है पर्सनली. आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, लाइक शिटी फिल्म्स भी होते हैं, वो सेकेंडरी है. नहीं, शिटी फिल्म्स के लिए भी तो सस्ता में बनाया तो लाइक वो सस्ता तो बनाया, रिकवर हो जाएगा. हाँ वही, क्योंकि है अब इंडिया में लाइक एवरी अल्टरनेटिव डे पीपल वांट टू हैव एंटरटेनमेंट. लाइक घर में अभी भी लोग तारक मेहता देखते हैं, कपिल शर्मा देखते हैं. तो एंटरटेनमेंट पीपल हैव लाइक आई डोंट नो इतना क्रेविंग है एंटरटेनमेंट के लिए. तो कंटेंट देखने के लिए, अरे जो टीवी नहीं देख रहा दिन भर रील्स घुमाते रहता है एंड कंटेंट देखते रहते हैं. तो पीपल आर देयर टू वॉच कंटेंट. इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग गिव देम. सो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता कोई कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड नहीं है. तुम कंटेंट देना चाहते हो तुम दो. तो देयर इज ऑडियंस. किसी भी मीडियम से कैसे भी तुमको ग्रैब करना है कर सकते. And what's been like, have you ever thought of quitting filmmaking बीच में, like last 12-13 years में? सी क्विटिंग तो ऐसा कभी, मैं मजाक में बहुत बार बोलता हूँ, यू नो, बट क्विटिंग तो ऐसा कभी नहीं. लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर हम सबका स्पीसीज, like there is a beautiful documentary on making of लगान. उसमें I don't remember who, but someone says that कि चलो क्या नाम? चलो someone says in that कि हम सबको 9 to 5 जॉब नहीं अच्छा लगा था, that's why we started doing 24 hour job. So it's true. Like हम किसी को भी we are not like हम rational person नहीं है, हम practical person नहीं है. Yeah. We are all programmed to do something weird, even if on a cost of your health, family life, personal life, everything. But कुछ अलग करना है भाई. तो बचपन से था वो. तो ऐसा नहीं कि something which I program myself. तो मेरे को नहीं पता कि इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ. अभी तो 100% नहीं कर सकता. जब मैं कर भी सकता था तो भी मुझे पता नहीं था. It always excite me, the universe of it. I always like the idea कि यार like when एक idea आता है, like filmmaking can start with anything. Like one image can make a final product in it. So, and also I always want to get associated with the project at the pre-production level and be there till post. And I think I'm like very, 1 or 2 ADs might be like that. Ki generally ADs generally do project on set and then leave. Yeah, but correct. I'm from the pre-production shoot until the final DCP or nowadays exports, whatever it is. So till that time, so पूरा प्रोसेस, तो एक आइडिया से कैसे जनरेट होता है एक फाइनल प्रोडक्ट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. मतलब जब भी तुम एक सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी, लाइक धनक started with an idea of like Nagesh Kukunoor. Yeah, the kids holding hands. Holding hands on the desert. Yeah. And it was just an image, nothing, just one image. And whole script got written, film got made, songs were there. कैसे हो गया यार? It's magical. You know, actually in one of my film school applications मैं apply कर रहा था, it was send us 5 photographs that you have taken that convey 5 different stories. So that was like an exercise, like. Correct. So photo story is one of the exercise that lots of film school did. Yeah. Photo story, like don't shoot a video, but with a series of photos. Yeah. So do that. So yeah, this is like very like it also shows ना how do you look at world. Like मैं एक चीज मैं देखूंगा तो देख रहा, दोनों देख चीज सेम ही रहे. Like in fact the films also, like a film I see and a film you see, तो हम एक ही फिल्म देख रहे लेकिन तू कुछ अलग देखा, मैं कुछ अलग Correct, देखा. 100%, It's perspective. So that is very important. Yeah, no, and also like some people like hate a movie and you may really like the same movie, and like. And reverse also. Yeah, and reverse also. Has it like, so what's the hardest part of your job though, like about this career? Hard in the sense every job में there are people who are losers, there are people who are mediocre, and there are people who are genius. And in other words, people who are achiever and people who are non-achievers. So some, like when I was in bank or even in sports, there are people who was trying like for sports में, lots of my friends like they wanted to be in cricketer. 30-32 साल के हो गए, अभी career is gone. Like it starts from when you're 17. 30-32 साल में you're trying, कभी रणजी खेल लिया, कभी ये खेल लिया and all, and उसके बाद career खत्म हो गया, बुढ़ा हो गया, अभी तो नहीं कर सकता कुछ. So हर एक ऐसा नहीं कि खाली इस फील्ड में, हर एक फील्ड में वो होता है. So ऐसा नहीं कुछ ऐसा specifically hardest, ये बहुत hard है. But to get like to achieve something is difficult. To make your film is difficult. ऐसा नहीं कि it's easy. To make your film, to write your film, to. No, but as an AD,
as an associate director, as someone who's not directing the film and who's an integral part of making it? What's the hardest part of that? To get up in the morning, I guess. No, to be very frank, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि मतलब it is very difficult. अच्छा, so now, okay, if you ask me, the hardest part for me is handling the, like, it's people management. Like how to tell someone, like, again, if he's my AD or if he's a cameraman, or how to tell them without offending them, and what they will do after what I'm saying them should be in my favor. Yeah, because you have to get the workout at the same time. You can't have them quit in the middle of the day because you've Correct. They also, upset there were them. like lots of ADs, they go to like emotional turmoil, like they are crying on set. I had an तूने कितने को रुलाया मेरे सामने? I had an AD last and he did like lots of fuck up in art. So उसने कुछ fuck up किया था सुबह, like when the day started. हाँ. पैकअप के बाद मैं सोचा था इसको सुना होगा. After the packup he started crying. Before मैं उसको कुछ नहीं बोला. हाँ. रंजीत भाई मेरे से नहीं हो रहा है. और he was like रो रहा है. तो मैं क्या बोलूँ, मैं उसको चिल्लाऊँ क्या, मैं उसको like जप्पी देना पड़ेगा. समझाना दूँ. मेरे को समझ में रहा. तो this is the hardest part, to be very frank, like how to get other people. See, also it's why it is tricky, and I will tell you. Again, going back to Aasra, like everyone looks at director. कि यार सर इसका क्या मतलब है, सर ये कप वाइट रहना चाहिए कि ब्लैक रहना चाहिए. अरे यार मैंने नहीं सोचा है. मैंने सोचा दो बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, वो व्हाइट रहेगा ब्लैक रहेगा, मैंने सच में नहीं सोचा. मैं राइटिंग इट. बट इफ आई टेल यू दैट, इफ आई टेल माय एडी, इफ आई टेल माय कैमरामैन कि यार आई डोंट नो, सो देन I don't think they will also work in the right direction. So in a spur of a moment, I'll say no, I want white, and I don't know it कि मेरे को white चाहिए. हो सकता है कि मैं कैमरे पे देखूंगा बोलूंगा नहीं white is not working, bring black. Get 2-3 options. Get 2-3 option, ये भी हो सकता है. हाँ. So knowing it is a very difficult task. Like I don't have all the answers. Like and why should I? Like because I am also exploring it, I am also learning it. So ऐसा नहीं कि मेरे को पता है सब. So but when you have to behave like you have, तुमको सब पता है, वो एक बहुत tricky part है. So it's a difficult work to And you have to also stand by your decision, even if it's... no, that's something which I think you shouldn't stand by your decision. If you think if it is wrong, you should accept it. Oh yeah, I think I made a wrong call. Can we rectify it? Yeah. I think we should do that because it's your film at the end of the day. Correct. सब तेरे को ही गाली देने वाले हैं. So if you think it's wrong, you should just accept it. And I think that's a beautiful way, and that's like, and everyone understand it. Your crew will understand it. But yeah, so point of saying it is कि यार for every call you can't do that. Like यार sir ये sound ऐसा है, यार ये light ऐसा रखो, everything you can't do that. You have to take calls. You have to take calls. That's the choices are what you're making. Yeah. So Decision making. everything is choice, ना, like Yeah. everything. Like बंदा सिगरेट पी रहा है तो बेंसन लाइट पे या क्लासिक माइल्ड पे हो, you will say कि हाँ बेंसन लाइट ले ले. You have never thought about it, but Then it has a white tip. on the camera it's a white tip and that's a brown tip. अरे नहीं यार ये तो मेरे एक्टर के साथ ये गंदा लग रहा होगा, because eventually वो दिख रहा है. Yeah. So yeah, you can change it. But that's the hardest part. People management, what to किसको क्या बोले कि वो तुम्हारे फेवर में काम करे. बिकॉज सबको, अगर क्रू में सबको, जो अगर तुम्हारे 150 लोगों का क्रू है, अगर सबको लगेगा ये पिक्चर जो बन रहा है ना ये तो ऑस्कर लेके जाएगा, तो तुम्हारी फिल्म सक्सेसफुल है. और 150 लोगों को लगना चाहिए, उसमें से एक बंदा भी कोई कोने में बैठ के बोर हो रहा है ना. सो आई थिंक दैट्स ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क. सो वो एनर्जी कैरी ऑन होता है सेट पे. तो वो एनर्जी जो सेट का एनर्जी है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप और फर्स्ट एड, whoever, like they want to, like जो important HODs हैं, they have to like सबको एक एनर्जी और सबको एक ड्राइव चाहिए. वो ड्राइव देना पड़ता है सब. So that is the toughest part because उसकी emotional turmoil, you work like 16 hours, 17 hours, सबका personal life fuck हो जाता है. But does that, I mean, you're married, so like, how does your wife feel about your working hours? No, not like she's very comfortable with it. Like she doesn't have a problem. Like shoot के time पे यही होता है, like they're used to it. And we both like now I think 5 years. तो 5 साल हो गए हैं तो दोनों एक दूसरे से बोर भी हो चुके हैं. So yeah. काम पे रहे तो. काम पे रहे. And ठीक है, any advice you have for aspiring filmmakers?
It could also be what other people have told you. No, that no. you've I will applied. say what I want to say is like कि if there is something else that you can do and be happy, don't be a filmmaker. You should only try to be a filmmaker if you can't do anything, and you can only be happy while being a filmmaker. Like if you can be an accountant and be happy, that's the correct way to go. If you can be a lawyer and be happy, if you become an engineer and be happy, so eventually be happy. But if it's a compulsion kind of thing. If you want to be a filmmaker and there is a compulsion for you to be a filmmaker emotionally and mentally, then only you are welcome. Because it's a difficult thing. It's not easy. No one will take you seriously. If you start, I don't take people seriously. If some new कोई नया बंदा मेरे पास आके बोलता है सर एक स्क्रिप्ट लिखा है, मैं नहीं लेता seriously. कितने लोगों को seriously लेगा तू? नहीं, actually समझ में आ जाता है. See, I will like bringing like I'm just going back test case ना. हम जब भी first time काम किए थे, and I remember you did some presentation without I giving you that presentation. You did something. You were third or fourth AD or something I said like, with me, like you were the intern. ऐसा कुछ ज्वाइन हुआ था ना तू? Yeah. So तेरे से ऊपर कोई था, I guess I don't remember the name. But हाँ कोई था. Sahil. हाँ कोई था. And he was the shouting. He came like he was shouting at you. ऐसा कुछ हुआ था. मेरे को याद नहीं अच्छे से. But I just saw that बंदे को बोला नहीं, इसने presentation बना दिया. It was like a nice and detailed presentation. Like कुछ तो मेहनत किया था. ऐसा नहीं कि आधे घंटे में कुछ कर दिया. कुछ लिया तूने, 1-2 दिन लेके किया है कुछ presentation. Then that was the first point where I started taking you seriously. कि हाँ ये बंदा कर तो रहा है कुछ. That's the only thing I can say to anyone who want to be a filmmaker. कि यार if you can be happy, अगर तुमको यार अपने बाप का दुकान चलाने में मजा आ रहा है ना, so I think that's the correct thing to do. कोई सीधा पैसे के लिए आता है, फेम के लिए आता है, I don't think that matters and eventually like. Yeah, that because even you may not like 0.1% of those people get that kind of fame that you aspire to get when you're coming in with that naivety, you know. Correct. तो अगर तुमको मजा नहीं आ रहा है ना, if you feel your work as a work, you can't do it. Yeah. If only once you enjoy doing it, then only you can like loving it. Then only you can do it. Like अगर प्यार नहीं करते अपने काम से तो you're working every day. I think there is a saying also something like that. Yeah, no, because I realize this, like when I'm done with the day also, like if I'm not doing anything or not, I'm watching something, I'm consuming content as a film or a web series, or I'm writing, it's like your work never leaves you in a way. Correct. Or you're trying to think, okay, why haven't I finished this script? Chalo, I'll open it and see what's wrong with it. Correct. Like your work is always following you around at all times. There are lots of everyone enjoy watching movies, reading books and all. And that's why we are here. Like to be very frank, इसके लिए हम यहाँ पे आए. And eventually, when you get into media, there are people जिसको मैं because I watch films, तो मैं किसी को कुछ movie recommendation भेजता हूँ. After a year, if I ask him कि तूने देखा पिक्चर? अरे नहीं यार, देखने टाइम नहीं मिल रहा यार. ये चूतिया है क्या? तो जिस काम के लिए like तो आया है उसमें, तो there are people who are working in media and not watching anything, not reading anything, and I don't understand these people. They are doing it as a compulsion. They are doing it like a 9 to 5 work then. Yeah. तो मतलब क्या है? तो तुम हजार ऑप्शन है, and that's what I mean when I say if you don't love it, don't do it. मैं अगर मूवी ना देखूं, अगर मैं 3-4 दिन हो जाते मूवी ना देखे या कोई बुक कभी नहीं पढ़ रहा हूँ, so I feel like यार मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा लाइफ वेस्ट हो रहा है. So I think that's very important. Read. To be a filmmaker, you have to see. To be a writer, you have to read. So that's it. When I say see, it's not only cinema; it's also like Observe the world around you. Yeah. Yeah. So there's a saying like to be a visualizer, you have to see, and to be a writer, you have to read. ठीक है, चल, we're done with the episode. So thank you guys for watching. Like, share, subscribe, and watch City of Dreams season 2 and message Ranjeet for jobs. Season 3. And then season 4. We don't know that. अब मैं spoiler दे रहा हूँ.